Konkan is a stretch of land by the western coast of India. It is a sandwich between the Arabian Sea and the Sahyadri ranges of Western Ghats. Because of Western Ghats traps the moisture of winds from the Arabian Sea, they create a tropical climate along this region, which supports a wide array of endemic flora and fauna. You can find many bird species over here. But one species that attracts most of the wildlife photographers to come here and spend days after days to get a glimpse of it. The jewel of Konkan, black-backed dwarf kingfisher, also known as Oriental dwarf kingfisher. These birds are found in tropical moist dense forest, and they feed on insects, lizards, frogs, and crabs. These tiny birds with dazzling colors breed in the Western Ghats of Maharashtra during monsoon. Some of the best places to see these kingfishers in Maharashtra are Chiplun, Panvel, and Tamheni Forest. These are the breeding ground for ODKF. That's why many photographers come these places to get beautiful shots of this exquisite bird. So we also decided to go there and shoot some beautiful photos of Oriental dwarf kingfisher. We have contacted the person who has been known for his involvement to conserve the local forest and make an ideal environment for all the animals and birds in the region, especially for the dwarf kingfisher. Nishikant Tambe, popularly known as Nandu. He hails from a village called Shiravali near Chiplun. His passion for conservation has led to restoration of a forest on his 32-acre land, which we called Nandu's Bird Sanctuary. From Howrah, we catch Howrah-Pune Duronto Express and started our journey towards Chiplun. নমস্কার, এক্সপ্লোর দ্য ওয়াইল্ডে আপনাদের স্বাগত। আমরা আবার একটা নতুন জার্নির জন্য এই মুহূর্তে বাসে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা এখন ধরবো 5টা 21, আমরা ধরবো পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেস। So we are all excited and eagerly waiting in the train to reach the destination so we can take pictures of these beautiful birds. Next day, we reached Pune station and from there we have started our journey by car. The journey itself was so much beautiful, we were stunned to see all those ghats and greeneries. But it was a long journey, so we first decided we will not gonna take so much stop. But we couldn't stop ourselves and decided to take breaks on a viewpoint called as Necklace Point. The view was so much beautiful. We reached the destination at very late of night and we are all exhausted. On next morning, we went to the spot and very second we set our foot on the spot, our target just arrived and welcomed us. हम लोग अभी हैं चिपलून में नंदू जी के साथ। ये बहुत दिन का एक शौक हम लोग का पुराना हुआ। थोड़ा टाइम पहले ओडीकेफ का साइटिंग हुआ, बैठने के बाद ही वो भी नंदू ओडीकेफ एकदम बगल से अच्छा से फोटो हुआ। नंदू जी थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं कहना है, कहना है तो एक नेचर से कहो या ओडीकेफ से कहो, नहीं तो भगवान से कहो। मैं तो इस सब जगह का कस्टोडियन हूँ, मेरा काम ही यही है ना। ये जो ओडीकेफ के लिए आप काम कर रहे हैं, आपका कितना दिन से काम कर रहे हैं ओडीकेफ पर? ये तकरीबन मुझे 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। 20 साल में तो बहुत स्पेशली ओडीकेफ के लिए करता हूँ। उससे
14-15 साल हुआ है। अच्छा लेकिन कंजर्वेशन का करेंगे तो बचपन से मैंने ODKF को देखता आ रहा हूँ। अच्छा और पहली बार मैंने फ़ोटो खींचा, मैंने मतलब मेरे यहाँ किसी ने फ़ोटो खींचा था, वो था 2005 या 4 शायद से। तो उस टाइम से मैं अलग तरीके से ODKF को देखता आया हूँ, और 2010-11 से नज़रिया बदला और बहुत कुछ चीज़ें बदल गई। और आज जो भी नंदू सेंचुरी देखने के लिए आता है या ODKF देखने के लिए आता है, ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब ODKF ने किया है। लोग उसका देखने के लिए आते हैं, मुझे पैसे पे करते हैं कंजर्वेशन का चार्जेस, और उसी से मैं अपना जंगल बढ़ाता हूँ। तो ये जंगल भी मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, बताने के लिए मैं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में तो वही बढ़ा रहा है। वही भर रहा है। और ये जो आपका सोच है तो बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे शायद मलाबार के बहुत पीस मिलता है। हाँ हिंदी का ये तो नज़दीक का जगह है इधर, तो मलाबार हाँ, पीस मिलता है। वेस्टर्न घाट के स्पीशीज ज़्यादा मिलते हैं। हाँ। तो क्या मलबार ऐसा कोई स्पेशल कुछ मिलता है? ये मलबार पाइड हॉर्नबिल है जो कॉमनली मिलता है। अच्छा मलबार विस्लिंग फ्रेश है। अच्छा बहुत रेयरली मलबार बारबेट मिलता है, अच्छा लेकिन बहुत मलबार टोगन मिलता था पहले। अभी भी वेस्टर्न घाट में ऊपर थोड़ा जाएंगे तो मिलता है, लेकिन थोड़ा सा साउथ में मिलने लगा है। अच्छा हाँ, तो वो मिलता है। श्रीलंकन फ्रॉगमाउथ है, मिलता है इधर। हाँ वीगो सनबड़ी भी इधर मिलता है सर। हाँ, वो तो इसी वीगो का तो शायद गोवा महाराष्ट्र के सब जगह हाँ, मिलता भी नहीं है। ये यहाँ का एंडेमिक है। Endemic वीगर है। सनबर्ड मिलता है, ये तो एंडेमिक हो गया वीगर हाँ। सनबर्ड। और ऐसे स्पेशीज मिलते हैं। टोटल मेरा 246 से थोड़ा सा ऊपर स्पेशीज मिलता है। Suddenly, we spotted a Resper fowl just foraging beside the road. So we also took some beautiful pictures of it. After the first morning session, we went for the search of Vigo's sunbird. This sunbird is endemic to Western Ghats. But filming a Vigo's sunbird is very difficult. It didn't give us a chance to take a good video. Suddenly we heard a call of Indian pitta just behind us, and we saw it on a branch. After lunch, we again went to shoot ODKF, and again it gave us some beautiful shots and videos. Thanks to Nishikant Tambe sir, who just made our day not only successful, also unforgettable. If you like this video, please subscribe to my channel and press the bell icon, because many videos are waiting to release of our Wigwam series. So stay tuned.